Good morning students, class 10th, and today we are going to start the exercise 5.2. In exercise 5.2 what we have to do, we have to find the nth terms. Okay, अब सुनो, nth term we are having the two formulas. Nth term, two formulas are here from starting from end. क्या मतलब हुआ इसका? nth term, what does we mean by saying nth term? See, suppose it is a series, just see here, 2, 3, 4, 5, 6, suppose. Okay, ये बहुत ही सिंपल है, 2, 3, 4, 5, 6. If I will ask you what will be the 1000th term, मतलब ये पहला टर्म है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, ऐसे ही आगे जाके कोई ना कोई टर्म आएगा 1000 टर्म. अब हम कैसे मालूम करें? सपोज दिस सीरीज इज लाइक दिस, 12, 13, 14, 15, 16, तो क्या काउंटिंग करेंगे उसके लिए? नो. ये जो टर्म होते हैं जो सीरीज में आगे आते हैं उसे निकालने का हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, and that formula is here, just see. अब कैसे, कोई भी सीरीज़ है अगर स्टार्टिंग से पूछे तो उसका फॉर्मूला क्यों होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t. कोई लास्ट से पूछे तो an इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1t. इसका मीन्स ये है, कोई भी सीरीज़ है, ओके, उस सीरीज़ में स्टार्टिंग से अगर हमें किसी भी टर्म को निकालना है, ओके, कोई पूछे 50 उसका 50th बता दो, 62 टर्म बता दो, 63rd बता दो, तो हम इससे निकालेंगे. और अगर पूछे एंड से, मतलब यहाँ सीरीज़ ख़त्म होती है, जो सीरीज़ का बैक है, जो एंड है, उस एंड से अगर हमसे कोई पूछता है कि 20 टर्म बताओ कि सीरीज़ ख़त्म होने के जस्ट पहले 20 टर्म कौन सा होगा, 25th कौन सा होगा, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला. ओके, एन का मतलब nth टर्म, ए का मतलब जो था ऑलवेज फर्स्ट टर्म, एन का मतलब इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. ओके, यहाँ पे आओ. एन मीन्स द सेम nth टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म, and again number of terms, and D is the common difference. Okay, so just write these formulas in a very proper way in your fair copies. Okay students, now come on question number 1. In question number 1 it is saying fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference, and the nth term of the AP. See, I think in my view question number 1 is very 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 important. You know why? क्योंकि we know this formula, an is equals to a plus n minus 1t. अब इस क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे 4 थिंग्स हैं, an, a, n and d. अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आउट ऑफ दिस 4 थिंग्स 3 थिंग्स आर गिवन, मीन्स इन 4 में से कोई भी हमें 3 चीज़ पता होगी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दी 4th थिंग. इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बताएगा हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला इन ए वेरी प्रॉपर वे, हाउ टू नो द मेथड ऑफ फाइंडिंग ए एन और डी. ओके, सो डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी द पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1. इफ यू विल सी पार्ट फर्स्ट, something is given, yes, a value is 7, d value is 3, n is 8, and we have to find out an. See again on the board, a is given 7, d is given 3, n is given 8, and an is we have to find out. So just substitute the value of a, d and n in the formula. So an will be equals to, a means 7 plus 8 minus 1 in place of d 3. 7 plus 8 minus 1, 7 into 3.
और ये बात वी ऑल नो इन ए वेरी प्रॉपर वे कि अगर कहीं पे भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन. ओके, नेवर फॉरगेट दिस थिंग. 7 3s are 21. Okay, 21 plus 7, answer will come 28. Is it clear? Write this thing. Okay, students, now come on part second. In part second, A is given minus 18. D we have to find out. N is 10 and AN is 0. So we have to substitute all these values in our question. Okay, so AN means 0, A means minus 18 plus N means 10, 10 minus 1. In place of D it will be D because we have to find out the D. So 0 equals to minus 18 plus 10 minus 1, 90. So how to find out the value of D? First of all, transpose minus 18 to left hand side. It is negative, it will go as positive 90. 9 is in multiplication, it will go in division 18 upon 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18. Therefore, value of D will be 2. Is it clear? Note it. Okay, student, now see part third. In part third, A is missing. Okay, value of D is minus 3. Value of N is 18 and AN is minus 5. So first of all, again in the same way as we have done part first and second, you have to substitute this value in the equation. AN means minus 5 equal A we have to find out, N 18 minus 1, in place of D minus 3. See, the value of D is negative. Okay, so we have to substitute this thing in bracket. Okay, whenever any negative value come, then we have to substitute that value in bracket. Minus 5 equal A plus 17 into minus 3. Minus 5 is equals to A plus minus minus 17 17 3s are 7 3s are 21, I think 51. Okay, so we have to find out A, so substitute 51 to left hand side. Minus 5 plus 51 is equals to A. So 51 minus 5, how much left? 46. Yes, 46 is equals to A, or A equals to 46. Note it. Okay, student, now see part fourth. In part fourth, A is minus 18.9, D is 2.5, and we have to find out, and AN is 3.6. Okay, so just substitute the values. AN means 3.6 equal minus 18.9 plus N minus 1, and D is 2.5. So how to solve it? See, यहाँ पे we have to find out N. Okay, so no need of opening bracket और इसका multiply कराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. This 2.5 will go in division. Okay, so first of all, transpose minus 18.9 to left hand side. 3.6 plus 18.9 equal N minus 1 into 2.5. So how much it will come? 18.9 plus 3.6, 9 10 15, 8 9, 9 plus 3 12, 1 1 2. It will come 22.5 equal N minus 1 into 2.5. Okay, so now transpose 2.5 to left hand side. It is in multiplication, it will go in division. 22.5 upon 2.5 equal N minus 1. Point is cancelled by point, so what is left? 2 to 5 upon 25 equal N minus 1. 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 9s are 45. So 9 will be equals to N minus 1. Send 1
it is negative, it will go in positive, therefore n equals to 10. Is it clear? So I had done 4 parts out of 5, and 5th part you have to do by yourself in a very proper way in your fair copies. Okay, thank you.